So hi, good evening, everyone. Good evening. Yeah. So welcome to your webinar on bitmasking, and today we are going to talk about what are bitmasking operators, and we are also going to solve few problems on bitmasking, right? So can I know who all are there and from which college, which city? So I can remember your names. I can talk to you guys. So we have Harsh, Yash, Vishnu, Namrata, Manish, Love. Right. Hi, Japneet. All right. Hi, Rupal. Hi, Salman. All right. So most of the people are from Delhi. How many people from outside Delhi? How many people from outside Delhi? All right. So today we are going to talk about bitwise operators, right? And we are also going to solve few problems. I will take up problems from hacker blocks. I will take up problems from code chef. I will also take some problems from code forces. All right, so we will solve questions from all three of these websites, right? So I won't cover much of DP with bit masking because it is again a difficult topic and slightly advanced. So in this webinar I am going to discuss some basic to intermediate problems on bit masking. And in interviews no one asks you the hardest bit masking problems like the TSP problem on bit masking. I will also record few tutorials on DP with bit masking, but no, today we are going to cover the basic as well as the intermediate level bit masking concepts, right? And I will also tell you few hacks which you can use in questions. All right, so let's get started. So if anyone has some suggestion or anything you want to tell me about this webinar, you can message me. Right? So we also have people from Gorakhpur, Hyderabad. All right, we have Rajat from Pathankot also. ठीक है, so start करते हैं आज का webinar, right? So let's talk about bitwise operators, right? So all right, we have people from Fatehgarh also, right? Bhopal. All right. Hi. So let's talk about bitwise operators, right? So why should we use bitwise operators? The main reason is bitwise operators are very fast. Fast. And suppose, so because they work on bits, right? And information in computer is stored in the everything is stored in the form of bits.
So it is easy for the computer to work on bits, right? So bitwise operators are very fast, and we have, suppose I want to do some computation. If I use normal operators like division, multiplication, or modulo, right? So these operators work in n square time, right? Modulo works in n cube time. Okay. But bitwise operators like and, or, XOR, left shift, right shift, these are very fast and these work in n time, right? n time में काम हो जाता है. So we are going to discuss these operators today, right? So what are these operators? So this is called bitwise and. So this is your bitwise and. This is your bitwise or. This is your bitwise XOR. Okay. And this is your right shift operator. And this is your left shift operator. So first of all, those who do not know these operators, I will quickly introduce what are these operators. बंद कर दो, एक जना चलाए बस.
All right. Sorry, actually, I forgot to unmute the mic. So I was talking about bitwise AND. So these are the rules of bitwise AND. You have 0 and 0 equals 0, 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 0, 1 and 0 is 0. All right. So we have AND operator, right? We have AND. So am I audible? Am I audible to everyone now? So the next operator which I will discuss is the OR operator, right? Let's talk about what is bitwise OR. So OR का मतलब होता है अगर एक भी bit set है, so 0 or 1 is 1, so the output is 1, right? 1 or 1 is also 1, 1 and 1 or 0 is also 1, and 0 or 0 is 0. So these are the rules of OR. So these are the rules of OR. Okay. So suppose I am given a number A which is 5. I am given a number 7. So I have to print A or B. So A or B is nothing but 5 is 0 0 0 1 0 1 and B is 1 1 1. So OR will give me this and this, right? So these bits get added. So you can say A or B is now 7. तो 5 और 7 क्या, sorry, 5 और 7 का और क्या, तो आउटपुट इज 7. तो जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला नंबर आए, इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो. ठीक है. So these are the rules of OR. I hope everyone knows these rules. And let's talk about one interesting operator which is called XOR. Let's talk about XOR. So let's talk about XOR. So let's say I have a number called, uh, again, let's discuss the rules of XOR. So let's discuss the rules of XOR. So I have a number which is, uh, so XOR का मतलब है अगर दोनों bits different हैं, so the output is 1 and दोनों bits same है तो output is 0. So 1 XOR 1 is 0, 1 XOR 0 is 1 and 0 XOR 1 is 1. So these are the rules of XOR. Suppose I have A equals to 5, B equals to 7, and A is given as A is 101, B has triple one, and if I do XOR, so 1 XOR 1 is 0, this becomes 1, this becomes again 0 because same bits हैं, right? तो same bits का XOR 0 होता है, different bits का XOR 1 होता है, so the number becomes 2. So A XOR B here is 2. ठीक है. So these are the rules of XOR, right? So let's we will solve few questions, right? अभी हम कुछ questions भी करेंगे. So I will discuss few questions from hacker blocks, right? But before that, I will also talk about left shift operator. I will talk about left shift operator.
I will also talk about right shift. So left shift का क्या मतलब होता है? So let's say I have a number a equals to 5 and I write a left shift 1. So यहाँ से क्या होगा? Left shift का मतलब क्या है? सारे bits को एक से left shift करना है. So the number is 101. बाइनरी में ऐसा कुछ होगा मेमोरी में. तो लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या है? सबको एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना है. सो होगा क्या? दिस बिट विल फॉल. ये वाला बिट बाहर आ जाएगा बॉक्स से एंड यहाँ से वी विल इंसर्ट 1 0. सो यहाँ से हम एक 0 इंसर्ट कर देंगे. सो द नंबर विल बिकम 0 0 1 0 1 0, राइट? सो यू सी दिस नंबर इज नथिंग बट 10, राइट? सो ए लेफ्ट शिफ्ट बी का मतलब क्या होता है? द नंबर ए लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2. मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2. ए राइट शिफ्ट ए लेफ्ट शिफ्ट बी का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई द नंबर बाय पावर ऑफ 2, बाय 2 रेज टू पावर b, राइट? सो लेट्स से इफ आई हैव नंबर 1 एंड इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट 1 करता हूँ, सो दिस बिकम्स 1 0, राइट? सो दिस इज नथिंग बट 2. सो 2 को लेफ्ट शिफ्ट 1 करता हूँ, दिस इज बाइनरी एंड दिस इज डेसिमल, राइट? सो 2 को अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट 1 करता हूँ, सो दिस बिकम्स 1 0 0 विच इज 4, राइट? सपोज 3 को मैं लेफ्ट शिफ्ट 1 करता हूँ, दिस बिकम्स 1 1 1. So this becomes 1 1 0. So this becomes 6, right? So left shift a left shift b का मतलब क्या है? Multiply by 2 raised to power b. So let's also talk about right shift operator. Let's also talk about right shift operator, right? So right shift का मतलब क्या होता है? So let's say the number is 5 and this is 1 0 1 in binary and I write a right shift 1. So this is your right shift operator. So what happens is, ये जो बॉक्स है 5 का, इसमें से ये वाला 1 गिर जाता है और यहाँ से एक 0 ऐड हो जाता है, राइट? So this becomes 0 0 0 1 0. So you know this number is nothing but 2. So shifting right shift 1 gives me 2. So this is same as, so this is same as 5 upon 2, which is also 2, right? So if I do 5 left shift 2, so it means दो बार shift करना है, right? So 0 0 0 1 0 1, तो इसको दो बार shift करेंगे तो ये दो bits गिर जाएंगे, right? And यहाँ से दो zeros add हो जाएंगे. So this will become 0 0 0 0 0 and 1, right? दो bits shift होंगे, ठीक है? So you will shift by 2 bits. So this number becomes nothing but 1. So this number becomes nothing but 1 and this is same as 5 divided by 2 का square, right? So this is 5 by 4 which is 1, right? So it means a right shift b का मतलब क्या है? a को divide करना है, so this is equivalent to a divided by 2 raised to the power b. So why I'm using this is fast, right? So this is fast, division is slow, this is slow and this is fast. So I use bitwise operators. So that's why we use bitwise operators, right? So Ashu is saying one left shift B का क्या होगा? So one left shift B का मतलब क्या होगा? So this is same as 1 multiplied by 2 raised to power B. So you can also write one left shift B. ठीक है? ये भी लिख सकते हैं. Right. Yes, Ashutosh Dwivedi is also right. Hello to everyone who joined later. Hello.
So we have seen these operators, right? So we have seen and, we have seen or, we have seen XOR, we have seen left shift, we have seen right shift, right? So we also have not. So we also have not. So suppose I have a number जिसके bits ऐसे कुछ है, right? So not of this will change the number to, it will flip all bits, right? So not will flip all bits. So this will flip all your bits, right? Thanks, Benjamin. So let's solve few problems. Let's solve few problems, right? So question number one. So question number one for today is, you're given you're given list of numbers where every number is occurring twice except one number, right? So how you can solve this question? So let's say the numbers are 5, 2, 1, 2, 5, 6 and 6 here. So you have to find out the unique number. So you have to, let's say this is 9, right? So you have to find out the unique number. So tell me, how will you approach this question? How will you approach this question, right? I got the correct answer from Ujjwal, right? Rishabh का भी सही आंसर आ गया है. So people are saying we have to take XOR of all elements, which is correct. So XOR से क्या होता है? देखो क्या होता है. अगर मैं बोलूँ 5 XOR 2 XOR 5 करना है, so ये क्या होगा? So let's see what happens is, so numbers which are same cancel each other, right? So 5 will cancel 5 and I will get 2. Let's see how. So 5 is 101, 2 is 010 and 5 is again 101, right? So पहले इन दोनों को XOR करता हूँ. So I will get triple one and इसका XOR करता हूँ 5 से, right? So what I will get is 010. So I get the unique element. So I get the unique element. So this one was pretty easy. So what will happen if you XOR all the numbers? So 5 will cancel 5, 2 will cancel 2, 6 will cancel 6, and you are left with bits of 9. So you will get bits of 9. So the correct solution is to XOR all the numbers. Okay, you have to do XOR of all numbers. Akash is saying my negation of 2 gives -3. It is how the numbers are stored in 2's complement form, right? So in computer, the numbers are stored in a form called 2's complement form. So that's why you are getting these results, right? So let me tell you about 2's complement form also. What is 2's complement form? So suppose, so actually what happens is computer does not have a circuit for subtraction, right? Computer does not subtract.
right? So what happens is, if I have a number called 5 and I have another number called 5, minus 5, or suppose I want to do, so let's see how computer stores minus 5. So let's see how computer stores minus 5. So what happens is, you write the binary for 5. So this is your 5. So minus of some number is nothing but take 2's complement of number. Okay. So 2's complement says flip all bits and add 1 and add 1. So if you flip all the bits of this number, so you will get this, and you can add 1. So this becomes 111111011. So this number is basically minus 5. So this is minus 5 in 2's complement form. So this is minus 5 in 2's complement form. Right. I will take Navneet your doubt also. Don't worry. Right. So 2's complement form में क्या होगा? So see what happens is, so suppose you want to do 5 minus 5. So what computer will do? It will do 5 plus minus 5, and this is stored in a 2's complement form, right? So let's see what is 5. 5 is this, and minus 5 is this, right? So I start adding these two. So 1 plus 1 is 10. So 1 plus 1 is 2, which is written as 10 in binary. So 1 plus 1 is 10. So I write 0 here. 1 carry, 1 plus 1 is 10, 1 carry, 1 plus 1 is 10, 1 carry, 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 right? So suppose this is a 32-bit box, and this carry goes on the 33rd position, right? So this gets discarded. So this carry gets discarded. So this is how computer does subtraction, right? So this is how computer does subtraction, right? So let's see. So can anyone tell me what is the, how to represent minus 1, or right, how we can represent minus 1 in 2's complement form? So how computer stores minus 1? So can you tell me? Right. Yes, we will discuss advanced questions also. We will discuss advanced questions also, right? Don't worry. So minus 1 is nothing but, you write 1 in binary like this, and for minus 1 you have to flip all bits. So this becomes 11111 followed by 0, and you have to add 1. So this becomes all ones, right? So if you have a 32-bit box with all ones, so this box represents minus 1. So this box represents minus 1. So this box represents minus 1. All right. So this is the correct answer. So this is the correct answer, right? So all ones stored in the computer represent minus 1. Right? Nishchay has got the correct answer. Right. So let me talk about some questions now. Right.
So let's see how do I check if a number is odd or even. How do I check a number is odd or even, right? So odd even कैसे देख सकते हैं? Suppose the number is 5, right? So number is 5, so it is written like this, and I know the number is odd, तो इसका last bit पक्का 1 होगा. जितने भी odd numbers होते हैं, they have last bit as 1. So this is Navneet's doubt. Last bit 1 होगा, so what I can do is I can take and with 1. So I can take and with 1. So if I get 1 here, so this number is odd. So if I get 0 here, so the number is even, right? So you can simply say if number and 1, so the number is odd, otherwise the number is even, right? So ये चीज समझ आ गई है? The number is even. So this is how it happens, right? All right, Ashutosh has got the correct answer. So you do not need to do modulo. You can just use the bitwise operators, right? So this will give you 0 if the number is even, and then if the number is odd, this will give you odd, right? So let me discuss about one more problem, right? Suppose I want to one more concept, right? One more concept. Suppose you are given two numbers A and B, and you have to tell me minimum minimum number of bits that I need to change to convert A into B. So this is the question, right? So let's say the numbers are, number one is A is 11 and number two is 15. So A can be written like this. A can be written like this. A is nothing but 11 is 1, 0, 1, 1, and 15 is this. So you need to just change one bit. So the answer is one bit, right? So can you tell me? Yes, Rishabh, it is faster than modulus, right? It is very fast. So can you tell me how we can solve this question? Anyone? So the question is, you have to tell me minimum number of bits required to change A into B. All right, Ankit has got the correct answer. So what we can do is we can take XOR of these two numbers. So if I take XOR, so what I get? 0, 1, 0, right? So this number tells me जहाँ जहाँ पे भी 1 आ रहा है, so यहाँ यहाँ पे so it is basically the number of ones in A's or B, right? तो जहाँ जहाँ पे भी 1 आ रहा है, वहाँ वहाँ पे डिफरेंट है, राइट? बिल्कुल ठीक है. नंबर ऑफ सेट बिट्स इन एज और बी, सो जहां जहां पे भी वन आ रहा है वहां वहां पे बिट्स डिफर कर रहे हैं. सो आई कैन काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन दिस नंबर. सो आई कैन काउंट द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन दिस नंबर. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. सो लेट्स सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ सेट बिट्स. So idea is to calculate
number of set bits in a number. So लेट्स से एक नंबर गिवन है, उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स मेरे को कंप्यूट करने हैं. Yes, Akash Chaube, I will discuss this question also. ठीक है. So we will also do XOR swapping. The next question we will do is XOR swapping. All right. So this question is suggested by Akash. So we will do this question, right? So let's try to compute the number of set bits. So suppose I am given a number n and I take that number as input, and how do I compute set bits? Let's see. So what I can do is, while this number is, let's write one function int find set bits. Yeah, count bits is one function which takes n as the input, and this also takes the number. So while this number is greater than 0, what I can do is I can maintain a count. Count is 0. I can simply do count plus equals to n and 1, right? So n and 1 करके आंसर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, and for the next time I can do n right shift 1, and I can say return count. So let's say the input is a number, and I do see out count bits in that number. So Aditya has got the correct answer. All right. So suppose I give some input. The input is a number, let's say 15 or 13. So the output is 3, right? 13 has 3 set bits. So 13 has 3 set bits, right? So this takes time, which is O of number of bits, right? O of number of bits. ठीक है? So जितने bits हैं उतना time लग रहा है. So how this works, let's see. Let's say the number is 13, so it is 1101. So what I do AND of this with 1. So there I have a box count. So count is initially 0. So this result comes out to be 1. So I add 1 to the count. The next time I do right shift, so the number becomes 110, and I do AND again. So this comes out to be 0. So I add 0 to my count. Next time I again right shift this number and do the AND. So this comes out to be 1. So I add again 1 to my number. Next time I again do the right shift and do AND. So this becomes 1. So I add 1. So next time when I do right shift, the number becomes 0. So the number becomes 0 and I stop. So the count becomes 3. So the count becomes 3. All right. So Shashwat has suggested me another approach, which is efficient approach. So Shashwat is telling me another hack, which is a very nice approach, right? So well done, Shashwat. So the hack is called n and n minus 1 hack. So I will discuss this hack also.
I will discuss this hack also, right? Let's see what happens in this one. So I can also do this. So let's first see what happens. Suppose I have a number 13, and 13 is represented like this. So let me take AND of 13 with n minus 1. So n minus 1 is 12, which is represented like this. So if I do AND, so I get the number as 1100, and this bit gets removed. So this number is 12. Next time I do the AND with 11. So 11 is nothing but, I know the 11 is nothing but 10, right? So this is 11, and if I do the AND of these two numbers, so I will get 1000. So I know this bit gets removed, right? So doing n and n minus 1 removes the last set bit. So Mansi has also given me correct answer. So this removes the last set bit, so I get this number. Next time I can take AND of 11 with, I can take AND of 11 with this number. The number is, let's say, 10. So 10 can be represented like this. So it is, right, and so the output is now 0. So the output is now 0. So you can see in this iteration this bit gets removed. So total iterations is one iteration, second iteration, and this is the third iteration, right? So you can do this in O of number of set bits. So earlier it was O of number of bits, now it is O of number of set bits. So this one is efficient. This one is more efficient. So you can write int count bits fast, int n. So you can write int count equals to 0 while n. So you can do count plus plus and n equals to n and n minus 1. So this is how we can solve this, and you have to return count. So let's run these. All right, so the output is again now 3. So the output is again 3. So it means our logic is correct. All right. So I hope this question is clear to everyone. So let's talk about one more problem. The problem is XOR swapping, right? The problem is XOR swapping. So Akash has asked this question. So ये जो अभी हमने किया n and n minus 1 hack, ये और भी जगह यूज होता है. So there is one problem on hacker blocks जो मैं अभी डिस्कस कर ही लूंगा, बट उससे पहले XOR swapping देख लेते हैं, right? So Akash is saying कि we can also swap two numbers using XOR. So what I can do is, so suppose the number is A, which is 5, and the number is B, which is 7, right? So I have to swap A and B. So what I can do is I can write A equals to A XOR B. So A becomes nothing but 5 XOR 7. Now ये मेरे पास आ गया. So I can write B equals to B XOR A. So this becomes 7 XOR 5 XOR 7. So B basically becomes 5.
So I b के पास क्या आ गया 5, and now I can write a equals to a XOR b. So this becomes a is nothing but 5 XOR 7 and XOR 5. So this becomes 5. Sorry, so this becomes 7. Right? So you can see a is now 7. After swapping, a is now 7 and b is 5. So this is called XOR swapping, and this is very fast. Yeah, yeah. So this is fast. This is faster than multiplication and division and other operators, right? All right. Ankit had got the correct answer. Ankit का आंसर बिल्कुल ठीक है. ठीक है. So everyone is getting this concept, right? All right. So let's talk about some more basic functions. Let's talk about some basic bit masking techniques, some basic functions in bit masking. Right? So suppose the first question is you want to extract ith bit of a number. Let's say the number is let's say 13. So it is like this in binary, and I want to extract second bit. So this is the 0th bit, this is the first bit, and this is the second bit, right? So suppose I want to extract the second bit. So यहाँ से second bit क्या होगा? So what I can do is I can build a mask like this. I can build a mask. Mask is basically a number like this, and I can do the AND. So this will give me some positive value if this bit is set. So I will get some positive number, or you can say non-zero number. So if this bit is 0, so I will get 0. 0. If this bit is, so this result will be 0 if this bit is not set, right? So the idea is to generate this number. So इसको कैसे generate करें? So I know this is nothing but 1 left shifted by 2 places. So 1 को अगर 2 बार left shift करूँगा, so I will get this number, and I can do the AND. So I can do the AND. So I can get this bit. So the function for this is how to get the ith bit. Let's see. I want to get the ith bit. So you are giving the number, and you are also giving the position, right? Ith position you want to extract. So you can simply say you can return number and 1 left shift I. So this will give you the ith bit, right? So suppose यहाँ पे I take two integers now. I take n and k, or I take n and I, and I do cout get ith bit of number and I. So let's say this number is 13, and I want to check the second bit of 13. Right? So I can return if this is not equal to 0, so I can return 1. Otherwise, I can return 0. Right? So the output is 1. Right? So this bit is not this number is not equal to 0. So I am returning 1. So if this number is 0, so I am returning 0. So I hope this one is clear. So this is how you get the ith bit, right? Using bitwise operators, right? So second problem is
Second is you have to void, you have to set bit, set the ith bit. So you're given a number and you have to change its ith bit to 1, right? So you have to change ith bit of a number to 1, right? So what I can do is, let's understand the concept first, right? So suppose I am again given a number 13. So the 13 looks like this, 1101, and I have to do, I have to set the first bit. So what I can do is, I can create a mask like this. Sorry, I can create something like this, and I can do OR. So if I do OR, I know, so this bit will get set. So the output will be 1111, right? So this is how you can set the ith bit of number, right? So let's do this one. Suppose isko set karna hai, which is already set, so the answer will not change. So the answer will not change. 13 ही रहेगा, right? So let's see. So what I can do is, I can create a mask. Mask is nothing but one left shift I, and what I can do is, do I can take this number by reference, and I can do n equals to n and mask. Sorry, n or mask. So it will be or. So this will change my number. So what I can do is, I can say set ith bit of the number is now 13, and the bit position is first. So I am talking about this bit position, right? So इसको set करेंगे तो answer should be 15. So 13 का first bit set कर दो, और you can say number है उसका set कर दो, right? So you can take n, you can take I, right? So let's give the input also. So 13 का first bit set कर दो, and oh sorry, so this should be cout n also, right? तो 13 का अगर फर्स्ट बिट सेट कर दिया तो आउटपुट शुड बी 15. सो यहाँ पे 15 आ रहा है, विच इज करेक्ट. सो आई गॉट द करेक्ट आंसर फ्रॉम आशीष, विच इज परफेक्टली फाइन. Let me talk about one more thing, one more basic function, which says clear bit, right? So you have to clear the ith bit of a number to 0, right? तो clear का मतलब है ith bit को 0 करना. So let's see how we can clear the ith bit. ith bit को कैसे clear कर सकते हैं? Let's see. So suppose I have a number 13 again, and I want to clear this bit. I want to clear a particular bit. So suppose I want to just remove this bit. I just want to remove this bit, change the second bit to 0, right? So I want to just change this bit to 0. So what I can do is, I can create a mask. I can create a mask which looks like this. So 111, and at this position it is 0. So what if I do AND of this number with this mask, right? So I know जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ तो 1 आ जाएगा, right? जहाँ जहाँ पे 0 होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, एंड से 1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो यहाँ पे एंड 0 से लेंगे तो ये वाला बिट हमेशा 0 हो जाएगा. सो दिस बिट विल बिकम 0, right? So this bit becomes 0. So I need a mask which looks something like this. So ith पोजीशन पे मास्क में 0 होना चाहिए, एंड बाकी सारी पोजीशंस पे वंस होने चाहिए. यहाँ पे वंस और यहाँ पे भी वंस, राइट? तो ith position should be 0. So what I can do is, I can still use the same mask. So what I can do is, I can do one left shift I,
So this will create something like this, and I can take the complement. So this will flip all bits. So I will get this mask, right? So here we have to do number and negation of mask. So mask is nothing but 1 left shift I. All right. So I can say void clear bit. I can take the number. I can take the ith position, and let's say, so int mask is nothing but number 1 left shift I and negation of this, complement of this. So using the not operator, I can say n equals to n and mask. So this will clear the bit. This will clear the bit. So I can say, instead of setting bit, you can clear the bit. Clear clear bit. You give n. You give I. Right. So let me test this function. Let's give the custom input. So suppose 13 का मैं second bit clear करता हूँ. So the number becomes now 9. So number becomes 9. So 13 का second bit clear कर रहा हूँ. So the output should be 9. Oh, 13 was this number. Alright, so I have to take this number by reference. So then output is now 9. Right. Alright. So I hope this part is also clear to everyone till clear bit. ये समझ आ गए? Alright. So I'm moving to one more example. The problem is right. So the problem is we have to find subsequences of a string. We have to find subsequences of a string, right? इसके बाद हम कोड शेफ का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? We will also take one problem from code forces. So I have to find subsequences of a string. ठीक है. So suppose I am given a number A B C D and मेरे को इसके सारे subsequences print करने हैं. So ABC की अगर मैं बात करूं, so subsequences क्या क्या हो सकते हैं? It can be A, it can be B, it can be C, it can be AB, it can be BC, it can be AC, it can be ABC also, right? So these are the possible subsequences of this number, right? So what I can do is I can just write the, I know there will be two raised to power 3 subsequences, right? So because हर एक character के पास दो options है, यहाँ पे भी दो options है, यहाँ पे भी दो options है, यहाँ पे भी दो options है, right? So what I have to do is, so इसके पास दो ऑप्शंस हैं. सो इसकी पोजीशन पे ले भी सकते हैं, इसको नहीं भी ले सकते. 0 या 1 आ सकता है, 0 या 1 आ सकता है, 0 या 1 आ सकता है, राइट? So there are 8 possibilities. So I do the numbering from 0 till 7. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
तो इनका बाइनरी लिखते हैं. सो बाइनरीज का क्या होगा, 0 0 0 और एक नल सबसीक्वेंस भी होगा जब मैंने कोई भी करेक्टर इंक्लूड नहीं किया है, राइट. सो 1 का क्या होगा बाइनरी, 0 0 1. 2 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 0. 3 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 1 1. 4 is 1 0 0. 5 is 1 0 1. 6 is 1 1 0. 7 is 1 1 1, राइट. सो अगर मैं बोलूँ 1 और इसको मैच करना, राइट. सो इसका मतलब क्या है, सो आउटपुट क्या होना चाहिए, ए बी सी. और अगर मैं इसको मैच करवा रहा हूँ 0 0 1 को, तो द आउटपुट शुड बी सी. यहाँ पे मेरे को सी मिलना चाहिए, राइट. या फिर मैं 1 0 1 को और ए बी सी को मैच करवा रहा हूँ, सो आउटपुट शुड बी ए सी, राइट. सो यूजिंग these numbers are acting as a mask. So these numbers are acting as a mask. Yeah. इन नंबर्स को एज अ मास्क यूज करके मैं अपने सबसीक्वेंसेस फिल्टर आउट कर सकता हूँ. आई कैन फिल्टर आउट कौन से करेक्टर्स मेरे को पिक करने, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट एक्सट्रैक्ट द लास्ट बिट और इसको राइट शिफ्ट कर दूंगा. इस बिट पे चला जाऊंगा, फिर इस बिट पे चला जाऊंगा. फॉर ऑल नंबर्स इन द रेंज 0 to 2 raised to the power n minus 1. सो वेयर n इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. सो इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट n minus 1. तो इस रेंज तक के नंबर्स का मेरे को नंबर्स जनरेट करने हैं, उनके बिट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. अगर बिट 1 आ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को करेक्टर इनपुट में लेना है, आउटपुट में लेना है, अदरवाइज मेरे को नहीं लेना है, राइट. संभव इज राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है. सो मैं उल्टा भी कर सकता हूँ. आई मीन अगर 1 आ रहा है यहाँ पे तो आई कैन टेक ए. इफ 0 आ रहा है तो आई कैन टेक आई कैन स्किप बी. 1 आ रहा है तो आई कैन टेक सी, राइट. सो आई कैन read the numbers from in this order, extract bits in this order, and I can find subsequences in this order, right. मेरे को तो ये a to इस order में चाहिए. So we can do this one also. So this will generate all subsets. So this will generate all subsets. And the complexity कितनी होगी, we are generating the numbers till this into n. So into n. So let's solve this question. So this is generate all subsets using bit masking. So suppose I am given a function ठीक है. तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ. तो what can I do is I can just have a character array a. I can take input this array and I can generate subsets, right. So void filter characters is one function which takes a number and the character array. And void generate subsets is another function which just takes the character array, right. अभी दोबारा बता देंगे संजीव, डोंट वरी. So filter characters is one function and generate subsets में what I have to do is I have to first generate a range of numbers from 0 to 2 raised to power n minus 1, right. So that for that I need to calculate the length. Length is, or the n is nothing but strlen of a. I can include the header file also. This should be char star, right? And I can just iterate over numbers from 0 till I less than what?
1 left shift n minus 1, right? Or you can say the range is nothing but till 1 left shift n minus 1, right? So यहाँ तक के मेरे को numbers generate करने हैं. This is nothing but 2 raised to power n minus 1. So I less than equal to range I plus plus, right? So filter characters क्या करेगा, जो भी मेरे पास number आ रहा है उसमें से bits extract करेगा और character array में से वो characters pick करके screen पे print कर देगा, right? So I can just call filter characters for every number in the range, for every number in the range, right? So this gets the character array, right? So this is getting a number. So suppose a is a array is the string abc and number is 5. So the output should be ac because b वाला bit जो है इसका वो 0 है, right? So what I can do is while this number is greater than 0, I can extract the last bit, right? I can extract the last bit. So what you can do is you can just see out, uh, let's say there is one variable I 0. So you can see out if n and 1 अगर last bit set आ रहा है, so what we have to see out, we have to see out a of I. अगर कुछ और आ रहा है, so we just have to see out nothing, right? आप ऐसे भी लिख सकते हो, right? So you can do I plus plus and for the next bit number equals to number right shift 1. So let's try to run this one also. तो रन करके देखते हैं. So let's give the input also. Let's say the input is ABC and here I should also give handle, right? All right, so I cannot write like this. So what I can do is I can just write like this: cout AI and cout space. Okay. So this is the ternary operator. If the last bit is 1, so I will get the ith character. If this is 0, I will not get the last character. ओ इसको हमने कॉल नहीं किया है. We have not called this function, right? So let's run this one. Right, so you can see you are getting all the subsets. You're getting all the subsets. So what is happening is I will just quickly go through this one, right? So let's discuss this function. This is the most important function, right? So what happens is, so suppose you are given this array as ABC and you are given this number as 5, which is nothing but 101 in binary, right? So what I do is I take a index 0 which is pointing to this A and I check number and 1 क्या आ रहा है. So इसका AND करता हूँ 1 के साथ. So what I get is 1. So if this comes out to be 1, it means true. So it prints AI. So it prints A on the screen. Otherwise it just skips, does not print anything, right? So this is your tertiary operator also, right?
So the next time I do right shift, I goes to this position and number is shifted right, so this becomes 0 and 1 is 0. So this is 0, so I print nothing. So I do not print anything. This is a null string. I do not print anything. So I plus plus, I comes to this position, right? So next time this is 1, so 1 and 1 becomes 1. So I know if this result is 1, so I have to print the ith character. So I get C. Right? So the next time the number becomes 0 and my while loop stops. Right? So next time I do it for 6. So 6 is nothing but 110. So I get the output as A for this, B for this, C for this. So after this I get BC. Right? So the next output is BC, A, B and C. Right? So bits are extracted in this order and characters are extracted in this order. So this is why I'm doing this. Right? So this loop generates the numbers from 0 till 7, which is the length of the string, right? Because this is 1 left shift 3, which is 8, minus 1 is 7. And for every number, I just filter out the characters from the input string. So is this method clear? Is it clear to everyone? Tell me. Yeah. I think I can also do this. I can just leave the part. No. So this gives a error, right? So I cannot do this. So there must be some statement here, right? So there must be some statement, maybe one. This is also fine. So null string दे देते हैं इसलिए हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, right? So Japneet says yes, everyone got it, right? Move forward, right? Pulkit says yeah. All right, सबको समझ आ गया है? बिल्कुल समझ आ गया सबको. ठीक है. ये तो 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 सबको समझ आ गया है. बहुत ही अच्छी बात है. Right? So everyone is going thug, right? तो एकदम मस्त कोड समझ आया है. ठीक है. So let's discuss one problem from Code Chef, right? ठीक है. So Code Chef का ये जो question है, this is say based on this. This is also the problem is paying up, and this appeared in one of the long contests, right? So what it says, the question says, so the question is मार का है, ठीक है? M- Marcha one, right? Marcha one, right? So तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? There is a person in Byteland. There is one person. So it has some money, right? So the person has some money. So there is one person and there is one robber, right?
सो रॉबर इसको बोलते हैं गिव मी एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज, गिव मी एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज, एंड इसके पास कुछ पैसे हैं, इसके पास कुछ पैसे हैं, लेट्स से इसके पास 10, 15, 20, 25, 30 रुपीज हैं, राइट? सो notes these are the notes the person is having, right? So you have to tell me, is it possible for him to is it possible for him to give a subset of notes that sum to k, that sum to k, ठीक है? So मैंने बोला let's say the k is 65. So is it possible for him to give some notes that sum to 65? So in this case you can see, yes, 30 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं और 15 ले सकते हैं. So this is one subset. So if it is possible, so you have to print yes. If it is not possible, then you have to print no, right? So you are given some notes and you are given some k. So you have to tell me, is it possible for the person to give the subset जिसका sum 65 हो or not, right? Exactly 65 होना चाहिए, right? तो अगर मैं 68 की बात बोलता, so the answer is no. If I talk about 65, the answer is yes, right? So I hope ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे. अब क्या करना है? You have to generate all subsets and you have to compute a subset जिसका sum k हो. So this can, सारे subsets generate हो सकते हैं 2 की power n टाइम में और sum compute हो जाएगा n टाइम में. So the total time is O of n into 2 raised to power n. तो इस टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? कंस्ट्रेंट्स भी देख लेते हैं. लेट्स सी द कंस्ट्रेंट्स आल्सो, राइट? सो यहाँ पे गिवन है, सो योर वॉलेट डज नॉट होल्ड मोर देन 20 बैंक नोट्स. इट मीन्स सिर्फ जो एरे का साइज है वो 20 है, राइट? एंड फॉर एवरी नोट यू हैव टू ऑप्शंस. So for every note you have two options. So in the worst case it will be 2 raised to power 20, which is around 10 power 6, right? So and for taking the sum, for taking, and there are 100 test cases also, right? So let's see how many test cases kitne hain? 100, right? So this will take total time approximately 10 raised to power 8. So this can be accepted, this can be accepted because हर एक टेस्ट केस worst case नहीं होगा. So this will get accepted, right? तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, there are 5 टेस्ट केसेस. सो एक टेस्ट केस देख लेते हैं. सो there are 5 टेस्ट केसेस. इसमें total notes is, there are 3 notes and the denominations of notes is 1 1 1, and you have to make a sum equal to 3. So what you can do is you can take all these and the sum is 3. So the answer is yes, right? यहाँ पे 5 है and you have to make a sum 11. So you can make a sum 11. So you can do 8 plus 2 plus 1. So the sum is 11. So the output is again yes. So if it is possible to generate the subset, the answer is yes. So is this question clear? क्या ये सबको समझ आ गया? So this you can code yourself, right? So this you can code yourself, code at home, right? All right. So tell me, we cannot generate subsets in ON, right? संभव?
बिकॉज आउटपुट ही एक्सपोनेंशियल है तो हम कैसे जनरेट कर लेंगे, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम फ्रॉम हैकर ब्लॉक्स. So the problem is, so from the contest section, yeah. So the problem is unique number 2, right? So I'm going to discuss this problem. So the question says we are given an array containing n numbers and all the numbers are present twice except for the two numbers which are present only once, right? तो यहाँ पे दो numbers हैं जो एक बार आ रहे हैं, बाकी सारे numbers दो बार आ रहे हैं, right? So we have to find out the unique numbers in linear time without using any extra space and using bitwise operators, right? So we have to do it using bitwise operators, right? So let's see what happens. तो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक. लेट्स एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. So there are three numbers and the numbers are 1 to 1. Sorry, right? So I think sample input is wrong. Sample input is, oh yeah, sample input is not correct, right? So let's take one example. So let's say the array is like 1 3 5 1 6 3 2 and 2, right? So w- so the question says we have to find out those numbers which are just occurring once. So यहाँ पे एक number और add कर लेते हैं. नहीं, 6 है यहाँ पे, right? So the unique numbers are 5 and 6. So these are the two unique numbers. So can anyone tell me how we can solve this question? Ashutosh says we will XOR them. ठीक है. Let's take the first step. We are just going to XOR them all. तो इन सबको XOR कर लेते हैं. So XOR करने से क्या होगा? So 2 XOR 1 XOR 3 XOR 5 XOR 1 XOR 6 XOR 3 XOR 2. So 2 2 cancel हो जाएंगे, 3 3 cancel हो जाएंगे, 1 1 cancel हो जाएंगे and I am left with 5 और 6. ये बच रहा है मेरे पास. So I am just, मेरे पास ये बच रहा है. So अब क्या करूँ? So what should be the next step? How do I proceed? How do I proceed? Ashutosh is in the right track. So tell me more. अब क्या करें? All right, Ashish got the right answer. चलो 100 और लेके देखते हैं, right? So 5 is nothing but 101. 6 is nothing but 110, and what I get is
this is 1, this is 1, and this is 0, right? So I try to compute the first set bit. I देखो यहाँ पे पता कैसे चलेगा, right? अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, so I know this bit is either in 5 or in 6, but not in both. You can take any set bit. You can take any set bit, any one set bit. उसको लेके you can divide the array into two parts. You can divide the whole array into two parts, two sub parts, right? Two sub arrays. एक वो सब array जिसमें या स्मॉल पार्ट्स बोल देते हैं, ठीक है? एक वो array जिसके अंदर ये वाला सेट बिट है, और एक वो वाला array जिसमें ये वाला सेट बिट नहीं है, right? So what I am going to do is I am just in my case I am just going to consider the leftmost rightmost set bit. So I'm just taking the rightmost set bit in the result, right? So एक बार देखते हैं क्या होगा. So 2 का बाइनरी क्या होगा? 1 0. 1 का बाइनरी क्या होगा? 1. 3 will be 1 1. 5 will be 1 0 1. ये होगा 0 1. 6 होगा 1 1 0. 3 होगा 1 1 and 2 होगा तुम्हारा 0 1 0. ठीक है? So these are the binary representations of these numbers, right? So what I can do is, अब मेरे को पता है इस एरे के मैं दो हिस्से कर सकता हूँ. एक जिसमें ये वाला सेट बिट है, राइट? सो आई कैन जस्ट डिवाइड द एरे इनटू टू पार्ट्स. सो आई टेक द फर्स्ट पार्ट जिसमें सेट बिट है, इसके अंदर सेट बिट पड़ा हुआ है. सो 2 में पड़ा है, नहीं पड़ा. 1 में पड़ा है, पड़ा है. 3 में पड़ा है, पड़ा है. 5 में पड़ा है, पड़ा है. यहाँ पे 1 में पड़ा है, पड़ा है. 6 में पड़ा है, नहीं पड़ा. 3 में पड़ा है, पड़ा है. एंड 2 में पड़ा है, 2 में यहाँ पे सेट बिट पड़ा है, नहीं पड़ा. तो आई कैन जस्ट लीव 2 and 6, राइट? सो जब मैं इसका जोर करूंगा, सो व्हाट आई विल गेट? 1 1 हट जाएगा, 3 3 हट जाएगा, एंड आई विल गेट द फर्स्ट यूनिक नंबर विच इज 5. क्योंकि इस ये वाला जो 1 बिट था वो कंट्रीब्यूट किसने किया था? 5 ने किया था. सो ये वाला जो सब एरे होगा इसके अंदर 6 नहीं आएगा, तो इसके अंदर ओनली वन यूनिक नंबर विल कम. सो अगर मेरे को 5 पता चल गया, सो व्हाट आई कैन डू इज, जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आया था, जोर करने से रिजल्ट आया था यहाँ पे. सो इस रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या था? ये रिजल्ट था मेरा 5 और 6 था. एंड इसका मैं जोर कर दूं, जो मैंने नंबर 1 फाइंड आउट किया है, तो जोर कर दूं 5 से, तो आई विल गेट 6 ऑल्सो. तो मेरे को 6 भी मिल जाएगा. क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है? सो इज दिस लॉजिक क्लियर? बताओ, समझ आ रहा है? दिमाग की बत्ती जल रही है? ठीक है, शिवानी का आंसर ठीक है. बिल्ड अ मास्क विद सेट बिट एंड जोर विद द. ठीक है. लोकेश पूछो, क्या डाउट आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? लोकेश कह रहा है व्हाट इफ द नंबर्स आर 5 एंड 7. सो देख लेते हैं 5 एंड 7 क्या होंगे. देख लेते हैं उस केस में क्या होगा. तो अगर 5 और 7 है, सो लेट्स से द नंबर्स आर 1 1
2 5 7 1 1 2 5 7 एंड 2, राइट। तो इन सब का जोर करोगे, जोर करने से क्या आएगा, 5 और 7 विच इज़ नथिंग बट 101, और जोर ये, ठीक है। इनका जब जोर करेंगे सो दिस विल बिकम 0 1 0, एंड दिस हैज़ ओनली वन सेट बिट। कभी भी आंसर नॉन जीरो नहीं होगा, ये हमेशा आंसर नॉन जीरो ही होगा, जीरो नहीं होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा, बिकॉज दोनों नंबर्स में एक बिट तो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इन इन दोनों नंबर्स में एक बिट का तो डिफरेंस होगा। सो आशुतोष का डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, नॉन जीरो है तो अब ये आ गया, तुम्हें इस सारे को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें ये वाला बिट सेट है, जिसमें नहीं है। तो वन इज योर 0 0 1, 0 0 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। This is 0 1 0, 5 is 1 0 1, it is 1 1 1, and it is 0 1 0, right? So अब देखो वन इसमें आ रहा है, तो एरे के दो पार्ट्स करते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। तो पार्ट वन वन इसमें वन नहीं आ रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे वन नहीं है, तो पार्ट टू में डाल दिया। इस पोजीशन में वन नहीं है, इसमें डाल दिया। टू इस टू में यहाँ पे वन है, यहाँ पे डाल दिया। फाइव में यहाँ पे वन है, नहीं है, इसमें डाल दिया। सेवन में यहाँ पे वन है, इसमें डाल दिया। टू में यहाँ पे वन है, इसमें डाल दिया। सो अब इन दोनों पार्ट्स को जोर करो, क्या बचेगा, एक पार्ट में सेवन बच जाएगा और एक पार्ट में फाइव बच जाएगा। सो यही लॉजिक मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। पिछले लॉजिक में मैंने पार्ट टू कंप्यूट नहीं किया, मेरे को सेवन मिल गया, सेवन का मैंने जोर इससे कर दिया, सो मेरे को क्या मिल जाएगा, फाइव मिल जाएगा। तो आई विल गेट फाइव। सो 1 0 1 आ गया, दिस इज नथिंग बट फाइव। तो तुम्हें सेकंड नंबर भी मिल गया। सैम को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चल डिलीट। किसका था, अभिषेक था। थैंक्स अभिषेक फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो बाय मिस्टेक इट गॉट डिलीटेड, दोबारा भेज सकते हो। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू कोड इट, लेट्स ट्राई टू नाउ कोड इट। So let's see in the code. So suppose I am given an array, right? अब मेरे पास एक array given होगा, number of element कुछ ले लेते हैं यहीं पे। So let's say the array is 1 3 5 6 3 2 1 2, right? So this is array, number of elements कितने होंगे, size of array upon size of int. So what I can do is I can make one function, void find unique two numbers, and the input is a array and n, right? दो चीज़ें इनपुट हो रही हैं, ठीक है। एंड कैसे होगा, लेट्स
फर्स्ट जॉर ऑल द एलिमेंट्स, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स का जॉर कर देते हैं। तो जॉर करना है, so let's do the zor also. So int, this is my array, and array में जो elements, अच्छा array तो मेरे पास आ ही रहा है ऑलरेडी। So let's say result क्या होगा, result initially 0 होगा। I can just iterate over all the elements, I less than n, I plus plus, and I can do result equal to result zor array of I, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू इज, तो सैम, ओ सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू चेंज द स्क्रीन, राइट। हाँ कर दिया मैंने, चेंज कर दिया स्क्रीन, थोड़ा सा डिले है। सो रिजल्ट को जॉर करेंगे सबके साथ, उसके बाद देखो क्या होगा, रिजल्ट में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो भी दो यूनिक नंबर्स होंगे उनका जॉर, राइट। तो मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द राइट मोस्ट सेट बिट इन रिजल्ट, राइट। सो वो कैसे निकालूंगा, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से इंट I equals to 0 while this result is, एक कॉपी बना लेते हैं रिजल्ट की। So temp equals to result while this temp is greater than 0, and if temp and 1 अगर मेरे को bit मिलता है तो I can just break the loop, I can just break the loop, and otherwise I can do I plus plus and temp equals to temp right shift 1। तो क्या होगा, देखो क्या होगा यहाँ पे। तो सपोज करते हैं जो दो यूनिक नंबर्स थे, लेट्स से दो जो यूनिक नंबर्स थे वो ये थे, लेट्स से द नंबर्स वर 5 और 7। सो यहाँ पे क्या होगा, 101, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0, राइट। सो आई मेरा 0 है, मतलब यहाँ पे है टेम्प एंड 1, इसका एंड किया 1 से, यहाँ पे 0 आ रहा है तो ब्रेक नहीं होगा। सो आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा मतलब आई 1 पे हो जाएगा, और टेम्प राइट शिफ्ट हो जाएगा। सो टेम्प 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 में ये बचेगा 0 और 1, 0 1 0 था, राइट शिफ्ट के बाद ये बचेगा, आई 1 पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट बिट है वो सेट है, राइट। सो अब मेरे को पूरे एरे में से, लेट से एरे में नंबर था 13 6, 13 इज 1101 और 6 इज 110। सो मेरे को वो वाले नंबर्स फिल्टर आउट करने हैं जिनकी इस पोजीशन पे 1 आ रहा है, जिनकी इस पोजीशन पे 1 आ रहा है। सो आई नीड अ मास्क लाइक दिस, तो ऐसा मेरे को मास्क चाहिए। सो मास्क क्या होगा, नथिंग बट 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। सो दिस इज द मास्क जो मेरे को चाहिए। सो इसका मैं ऐड करूंगा 13 के साथ, तो ये यहाँ पे 0 आएगा। इसका मास्क करूंगा 6 के साथ, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये नंबर अगर 0 हो जाता है तो उसको एक्सक्लूड कर देना है, ये नंबर अगर 1 आ जाता है तो उसको इंक्लूड कर लेना है, राइट। सो लेट्स कंप्यूट द मास्क। सो मास्क क्या होगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। So this is going to be the mask, right? And
I have something called answer. Answer is now 0, or I can, you can say first number क्या होगा. First number अभी के लिए 0 मान लेते हैं, and you can just iterate over the array I less than n, I plus plus, and you can just XOR first number plus equals to first number XOR first number का XOR करो किसके साथ. ये तब करना है अगर if mask and array of I comes out to be positive. ठीक है, अगर ये नॉन जीरो निकल के आता है तो फर्स्ट नंबर का XOR कर दो array of I के साथ. So after this iteration you have the first number. तो second number क्या होगा. Second number will be nothing but result XOR first number. So you can just print the first number and you can also print the second number. ठीक है, so एक बार रन करके देखते हैं इसको. मैं एक बार क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ यहाँ पे क्या किया. अभी अभी एक बार दोबारा गो थ्रू कर देंगे. ठीक है, तो लेट्स से द नंबर्स तो मैंने यहीं पे इनपुट दे रखे हैं. नंबर्स ऑलरेडी इनपुट दिए हुए हैं. दीज आर द नंबर्स जो इनपुट दिए हैं, राइट. सो द आंसर शुड बी 5 and 6. सो लेट्स रन अवर कोड, बट फंक्शन कॉल नहीं किया है तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है. सो फंक्शन इज find unique 2 and I just give the array and then, right. 3 and 0 might be some mistake. छोटी सी कोई गलती हो गई है, देख लेते हैं. तो कैन एनीवन टेल कहाँ पे गलती हुई है. देयर इज सम स्मॉल मिस्टेक आई हैव मेड. तो mask will be this. एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इसको. उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. या ठीक है, वो द एरर वाज ड्यू टू प्रेसिडेंस, राइट. सो नॉट की प्रेसिडेंस हायर होगी. सो नॉट एज अ हायर प्रेसिडेंस. सो यू हैव टू मेक श्योर यू enclose योर एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट्स, राइट. सो प्रेसिडेंस की वजह से हो रहा था. सो अब मैंने ये कर दिया तो आई गॉट द करेक्ट आंसर. सो दिस इज करेक्ट. तो आई कैन जस्ट जूम इन. ठीक है, सो यू कैन सी कहाँ पे क्या किया मैंने. सो सी व्हाट हैपेंस इज, क्या किया यहाँ पे.
सो मान लो नंबर्स यहाँ पे क्या आ रहे थे, नंबर्स जो यूनिक आ रहे थे, तो रिजल्ट में क्या पड़ा था यहाँ पे पड़ा था 5 और 6, सो इट वाज 101 एंड 110, ये पड़ा था रिजल्ट में। एंड यहाँ पे जोर करने के बाद क्या आएगा, 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे भी आएगा 1। सो मैंने फर्स्ट सेटमोस्ट बिट की पोजीशन निकाली, सो टेम्प एंड 1 1 है, सो ये लूप यहीं पे ब्रेक हो गया, सो आई इज 0, सो मास्क क्या बना, 1 लेफ्ट शिफ्ट 0, सो द मास्क इज 0 0 1, राइट। सो इस मास्क को मैंने पूरे एरे के साथ एंड किया, पूरे एरे के साथ एंड किया। सो जो नंबर्स पड़े थे 1 2 3 5 6 3 1 2, सबके साथ ऐड करूंगा। सो फर्स्ट नंबर जो मैंने लिया था वो 0 था, सो 1 के साथ ऐड करूंगा, ये आएगा, 2 के साथ ऐड करूंगा, नहीं आएगा, 3 के साथ करूंगा, आएगा, 5 के साथ करूंगा, आएगा, 6 के साथ करूंगा, नहीं आएगा, 1 के साथ करूंगा, आएगा, राइट। तो सबको अगर मैंने ऐड और उसके बाद 3 के साथ ऐड करूंगा तो 3 भी आएगा। सो सबका जोर करेंगे, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आई विल गेट द फर्स्ट नंबर एज 5। और रिजल्ट में क्या पड़ा था, 5 और 7, और सेकंड नंबर के लिए मैंने जो रिजल्ट निकला 5 उसका जोर कर दिया इसके साथ, सो 5 गॉट कैंसिल, आई गॉट 7, तो मेरे को 7 भी मिल गया। सो दिस इज हाउ आई गॉट बोथ द नंबर्स, राइट। दोनों नंबर समझ आ गए, दोनों नंबर्स निकल गए हमारे, राइट। So this is the complete code. You can see. Yes, I have done the full screen mode. All right. देख लो. If you have any doubt, let me know. Shivam says nice. ठीक है. So अभी हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम और चीज़ें भी करेंगे. Dhruv also says nice. So आशीष से सर कुछ एडवांस क्वेश्चन करा दो. एडवांस वाला डीपी विद बिट मास्किंग के क्वेश्चन होते हैं, तो आज तो मैंने प्लान आउट नहीं किए, बट आई विल श्योरली रिकॉर्ड सम ट्यूटोरियल्स ऑन दीज क्वेश्चंस, राइट. बेंजामिन का क्या डाउट है, बता दो भाई, क्या डाउट है. ठीक है, तो बाकी लोगों को लिए तब तक मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ. तो कॉन्टेस्ट इसमें जा रहा हूँ मैं फिर से प्रैक्टिस में. द क्वेश्चन इज इनक्रेडिबल हल्क, राइट. क्वेश्चन इज इनक्रेडिबल हल्क. तो आप लोग इसको ट्राई करना, क्वेश्चन को बिट मास्किंग पे बेस्ड है. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हल्क है और एक एनिमी है, राइट. सो देयर इज हल्क एंड देयर इज वन एनिमी, एंड एनिमी जो है वो n लेवल्स ऊपर है, ठीक है. सो यहाँ पे हल्क खड़ा है और यहाँ पे एक एनिमी है विच इज n लेवल्स अबव, राइट. तो n कुछ भी हो सकता है, 13 लेवल्स हो सकते हैं, इट कैन बी 15 लेवल्स ऑल्सो. तो यू हैव टू टेल मी, हल्क जंप लेके एनिमी तक पहुंच सकता है, बट वो जो जंप्स है वो 2 की पावर्स में ले सकता है, राइट. 2 की पावर्स में जंप ले सकता है. तो तुम्हें बताना है कितने मिनिमम मूव्स लगेंगे उसको 13 पे पहुंचने के. तो अगर उसको 13 पे पहुंचना है तो वो 0 से सीधा जाए 8 पे, 8 से वो जाए 4 पे, सॉरी 8 से वो 4 का जंप ले 12 पे जाए, और फिर 1 का जंप ले वो 13 पे पहुंच जाए. सो ही विल नीड 3 जंप्स, 3 जंप्स लगेंगे. अगर एन कुछ और है, एन लेट से 9 है, सो 0 से 8 का जंप ले, फिर 1 का जंप ले, वो 9 पे पहुंच जाएगा. तो इट विल नीड 2 जंप्स.
So can you tell me ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो इज एनीवन गेटिंग कैसे होगा सॉल्व? We will do one more question from code forces, one more question from hacker blocks abhi. वैभव, सो आज के मैंने बोला था स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स होंगी, डीपी विद बिट मास्किंग एज एडवांस प्रॉब्लम्स। तो हमारा एक एडवांस क्वेश्चन, सरीम का बिल्कुल सही आंसर आ गया, विच इज विच सेज द आंसर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सेट बिट्स, विच इज करेक्ट बिकॉज 13 पे अगर मेरे को पहुंचना है तो 13 में जो सेट बिट्स होते हैं वो ये होते हैं, है ना, 2 की पावर्स में होते हैं। सो ये 8 कंट्रीब्यूट करता है, ये 4 कंट्रीब्यूट करता है और ये 1 कंट्रीब्यूट करता है। तो द आंसर बिकम्स 13 इन तीनों का सम। So this is the best way to reach 13. So we just have to count the number of set bits in 13. अगर 9 के लिए 2 आ रहा है, कैसे आ रहा है? 9 की बाइनरी होगा 1001। सो 9 में देयर आर 2 सेट बिट्स, तो सेट बिट्स काउंट करना तो हमने सीख ही लिया है। तो द आंसर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सेट बिट्स। बिल्कुल ठीक है, एवरीवन इज टेलिंग मी द राइट आंसर, दिस इज करेक्ट राइट। तो ये बिल्कुल सही है। तो अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम कोड फोर्सेस से है, ठीक है। रिकर्जन से टाइम लगेगा, बिटवाइज से फास्ट है, इसलिए तो हम बिटवाइज कर रहे हैं आज, बिटवाइज से जल्दी हो रही हैं चीज़ें। सो द क्वेश्चन इज, लोकेश आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट, लॉग इन, फ्लोर ऑफ लॉग इन, आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। लोकेश, so we are going to do one problem from code forces, right? so code forces में ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तवाज एंड सैडाज, ठीक है। so what this question says, you are given some lucky numbers, right? so what is a lucky number? Lucky number is a number whose decimal representation contain only the lucky digits 4 and 7। तो ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 4 और 7 आ रहा है, सो दैट इज अ लकी नंबर, राइट। तो हमें बताना है, इफ यू आर गिवन अ लकी नंबर, हमें उसका इंडेक्स बताना है, राइट। सो वी हैव टू प्रिंट द इंडेक्स ऑफ lucky number n, right? so let's say the first lucky number is 4, the next lucky number is 7, the next lucky number is 44, the next lucky number is 47, then 74, then 77। so this is the lucky series, so this is the lucky series on code forces, ठीक है। so if I am given 44, so मेरे को बताना है it is the third lucky number, so मेरे को उसकी पोजीशन बतानी है in the lucky series, ओके। क्वेश्चन समझ आ रहा है? so 47 is the fourth lucky number, right? तो अगर input is 44, so the output is 4, input is 74, the output is 6, 77 के लिए 6 होगा, 1 2 3 4 5 6th, and this will go on।
ठीक है। तो यू कैन सी 72 इज द 77 इज द सिक्स लकी नंबर, यहाँ पे गिवन है। तो 77 इज द सिक्स लकी नंबर। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें एक n के लिए बताना है, राइट। तो वी हैव टू टेल इट फॉर अ पर्टिकुलर n, सॉरी मतलब एक नंबर है उसका बताना है वो कौन सा, उसकी पोजीशन बतानी है, उसका इंडेक्स बताना है वो कौन सा लकी नंबर है, राइट। तो कैन एनीवन टेल कैसे होगा? Lazy gamers, I will give you questions to solve also. Don't worry. आशुतोष, तो इसको हम लीनियर टाइम में नहीं कर सकते बिकॉज n की जो वैल्यू है वो 10 पर 9 है। बाकी लोग जाग रहे हैं सो रहे हैं? 93 आर अवेक। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? एनीवन who can decipher the logic? जाग रहे हैं ठीक है। कोडिंग ब्लॉक से तोहफा कबूल करो। कौन बोल रहा है ये? ये पीछे मेरे साथ भव्या है, भव्या फ्रॉम NSIT, ही इज हैंडलिंग द चैट। बताओ यार कैसे करोगे? सागर का एक ब्रूट फोर्स मेथड आया कि जनरेट द सीरीज एंड कंप्यूट, सिंस n इज 10 पर 9 यू कैन नॉट जनरेट द सीरीज, है ना? बड़ा है। ऋषभ सेज प्रो, कौन है भाई प्रो? जोर विद 4 और 7, रुको सोचने दो, सोचो भाई सोचो। सोच लो आज, सोच के जाना क्लास, उससे पहले खत्म नहीं करेंगे, पहले सब सोचें। सोचो सोचो, ठीक है। तो 10 मैनू, ठीक है। तो लेट से द नंबर इज 47447, ठीक है। तो थिंक कैसे होगा, सोचें, ठीक है। पंजाबी विच सोचो। शाश्वत कमेंट दे रहे हैं। तो इसका इंडेक्स बताना क्या होगा भाई? अगर एक नंबर दे दिया मैंने, एक लकी नंबर है ये, तो क्या होगा भाई? दिमाग की बत्ती चलाएं। हाँ ये भव्य टी टीए है भाई, वही है।
यार किसी का आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और बताओ। क्यों शिखर भाई, भूख लग गई? शिखर पहाड़िया, मम्मी को बोलो खिलाएं कुछ, कॉम्प्लेन पिलाएं, एनर्जी लाएं। मम्मी नहीं दे रही तो आ जाओ हवेली पे, हम खिला देते हैं। पहाड़िया भाई। यार सेट बिट्स काउंट करने से कैसे होगा? हाँ, मानसी ने कुछ अच्छा भेजा है। मानसी इज ऑन द राइट ट्रैक। सही जा रहे हो, थोड़ा और सोचो। ठीक है, 2 मिनट और देता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। कोड फोर्स का सवाल है, कोड फोर्सेस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर देगा या क्लोजेस्ट आंसर देगा, उसको मैं एक टी शर्ट गिफ्ट करूंगा, अगर वो दिल्ली में कोडिंग ब्लॉक्स आके मेरे से ले जाए। हैकर ब्लॉक्स की टी शर्ट है, कोडिंग वाली। 44 इज द फिफ्थ नंबर। सागर सेकंड, थर्ड होगा यार। सागर थर्ड नंबर होगा, 4 7 और फिर 44, और कौन सा होगा? 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट वाले चालू हो जाएंगे, है ना? ये वोंग चू चियांग कहाँ से है? वोंग वोंग चू यांग, आर यू गेटिंग इंग्लिश? तो ठीक है, तो मानसी का जो हिंट आया है वो सही है। मानसी, मानसी का ठीक है आइडिया थोड़ा। तो देखो क्या होगा अगर मैं बोलूं इसके अंदर नंबर मेरा है, नंबर लेट से 77 है, राइट? तो 77 कैसे निकलेगा? ध्रुव कह रहा है सर मेरे को भी आना है आपकी हवेली पे। आ जाओ भाई। आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो आओ कभी, सीबी हवेली है हमारी, कोडिंग ब्लॉक्स 47 निशांत कुंज, यहीं रहते हैं हम, ठीक है। सो लेट से नंबर है मेरा 747, या फिर 77 की अगर मैं बात करूं तो 77 को क्या बोल सकता हूँ? इस पोजीशन को अगर मैं छोड़ दूं तो यहाँ पे इतने, इसके कितने नंबर्स होंगे? 2 नंबर्स होंगे। यहाँ पे 4 आ सकता है या 7 आ सकता है। आई कैन से 2 की पावर 1 नंबर्स होंगे, और यहाँ पे 7 है, ठीक है। सो यहाँ पे वो वाले नंबर्स भी बन सकते हैं जिसमें यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इस पार्ट के 2 नंबर्स बन सकते हैं, 4 और 7, और इस पार्ट के अगेन 2 नंबर्स बन सकते हैं, 4 और 7। यहाँ पे 4 आ सकता है। सो आई कैन से दिस इज नथिंग बट 2 × 2 की पावर 1, 4 नंबर्स, अगर करंट पोजीशन पे 7 है। ये बात समझ आ रही है? तो 77 तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा, 4 7 44, सॉरी सिक्स होगा, 77 सिक्स होगा। अभी देखते हैं, दोबारा देखता हूँ। 44 और 47, फिर 74 और 77, सिक्स नंबर होगा। कैसे होगा? प्लस मेरे को ये भी करना होगा, ये तो मैंने तब तब की बात की ना, अगर मेरे टू डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में तो 4 नंबर्स बन सकते हैं जो 77 से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। ठीक है, तो 2 डिजिट वाले 4 नंबर्स बन सकते हैं, और 1 डिजिट वाले कितने बन सकते हैं? 1 डिजिट वाले मेरे को पता है, अगर एक ही डिजिट रखना है
तो कितने बन सकते हैं, दो नंबर्स बन सकते हैं, 4 और 7। सो आउटपुट विल बी +2 की पावर 1, सो इट इज 6 आ रहा है। अगर मैं बोलूँ ये नंबर होता 47, ठीक है, अब 4 तो यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पे और कोई नंबर आ नहीं सकता, 2 डिजिट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आई कैन हैव 2 नंबर्स, यहाँ पे या तो मैं 4 रख सकता हूँ या 7 रख सकता हूँ, ठीक है। और 1 डिजिट वाले कितने नंबर्स होंगे, अगेन 2 नंबर्स, या तो 4 होगा या 7 होगा। सो 47 का आंसर क्या होगा, 2 की पावर 1 +2, इसके लिए तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर्स। क्या ये लॉजिक समझ आ रहा है, आर यू गाइस गेटिंग दिस लॉजिक? अगर मैं 474 की बात करूं, ठीक है, और 3 डिजिट नंबर की बात करूं, तो 3 डिजिट वाले कितने बन सकते हैं, यहाँ पे कितनी चॉइसेस हो सकती हैं, दो चॉइसेस यहाँ पे, दो चॉइसेस यहाँ पे, सो इट बिकम्स 2 स्क्वायर। 2 डिजिट नंबर की बात करूं कि नंबर ही 2 डिजिट का है, वो क्या हो सकता है, 47, 44, 77, ठीक है। सो 3 डिजिट में आई कैन मेक 2 की पावर 2 नंबर्स, 2 डिजिट में आई कैन मेक अगेन 2 की पावर 2 नंबर्स, एंड 1 डिजिट में आई कैन मेक 2 की पावर 1 नंबर। सो आउटपुट विल बी सम ऑफ दीज टू, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1। सो दिस इज द रैंक ऑफ 474। इसकी जो रैंक है ये होगी 474 की रैंक, ठीक है। बट इफ द नंबर इज समथिंग एल्स, 774 है, सो क्या कर सकता हूँ, इस 7 के जगह 7 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, सो इट विल बी 2 क्यूब। 2 डिजिट वाले नंबर कितने हो सकते हैं, 2 स्क्वायर। 1 डिजिट वाले कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 1। तो द आंसर इज 1 प्लस टू की टू वन सॉरी 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ये रैंक होगी 774 की। तो ये चीज समझ आ रही है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ध्रुव सेज नो, यस्तिका सेज नो, शिवम को भी नहीं आ रही समझ। अच्छा दोबारा देखते हैं, लेट से 774 नंबर है, इसकी रैंक पता लगानी है, ठीक है। तो इससे छोटे नंबर कौन से होंगे, इससे छोटे नंबर वो होंगे, वो सारे नंबर्स जिनमें इस पोजीशन पे 4 आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी आ रहा है। इस बात से एग्री कर रहे हैं, है ना। अगर वो नंबर 3 डिजिट का है तो वो ये वाले नंबर्स होंगे जिनमें यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, ऐसा ही होगा। सो ये वाले नंबर्स कितने होंगे, जो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, सो ये वाले नंबर्स होंगे तुम्हारे 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, राइट। इस बात से एग्री कर रहे हैं। अब इसमें देखना है मेरे को, इसमें ऐसे कितने नंबर होंगे जो 74 से छोटे होंगे, है ना। तो 74 से छोटे नंबर कितने होंगे, इस पार्ट के लिए निकाल सकता हूँ ना, 74 के लिए कितने नंबर्स होंगे छोटे। तो 74 के लिए मेरे को पता है, तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, सो यहाँ पे मैं 4 भी ले सकता हूँ और 7 भी ले सकता हूँ। सो इस पोजीशन के लिए दो चॉइसेस, इस पोजीशन पे मैं एक ही चॉइस ले सकता हूँ, 4। 7 तो ले नहीं सकता क्योंकि 7 7 7 बड़ा हो जाएगा। तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास
एक ही चॉइस है। तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास टू चॉइसेस हैं, राइट। सो इट बिकम्स 2 square plus 2, so this becomes 2 cube। 7 के लिए आंसर, ठीक है। अब देखो, इसमें तो सारा सिर्फ वो नंबर्स काउंट हुए हैं जो 3 डिजिट है। अब मेरे को वो नंबर भी तो लेने हैं इसमें जो 2 डिजिट वाले हैं, बिकॉज 774 से छोटे नंबर में 47, 44, 77, 74 ये भी काउंट होंगे, ठीक है। सो मैं 2 डिजिट वाले नंबर्स कंप्यूट करता हूँ। 2 डिजिट वाले में 2 ही बिट्स होंगे एंड सारे नंबर छोटे होंगे 7 से, है ना। सारे नंबर छोटे होंगे तो ये नंबर कितने होंगे, 2 स्क्वायर। वो नंबर भी काउंट करने हैं जो जिनमें सिर्फ एक ही डिजिट है, 4 और 7। सो ये नंबर कितने होंगे, 2 की पावर 1, क्योंकि एक ही प्लेस है और दो दो वेज है भरने के, राइट। तो इस सीरीज का तुम सम कर सकते हो, 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब फॉर दिस नंबर। एंड इसको निकालने के लिए यू कैन यूज बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 प्लस 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 प्लस 1 लेफ्ट शिफ्ट 3, ऐसा कुछ होगा। सॉरी, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 2 क्यूब नहीं होगा, 6 होगा ये। तो अब ये चीज समझ आ रही है, मतलब डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड। करंट पोजीशन पे 7 है या 4 है। 7 आ रहा है तो कुछ और आंसर होगा, करंट पोजीशन पे तो 4 आ रहा है कुछ और होगा, ठीक है। हमेशा ये जीपी नहीं बनेगी, थोड़े से डिफरेंट बनेगा। तो ये आंसर आ रहा है इसके लिए, बना के देखें, वेरीफाई करें। सो ये आंसर कितना आ रहा है, 2 की पावर 1 is 2 प्लस दिस आंसर इज 4 प्लस 4 प्लस 2, सो दिस बिकम्स 8। 8 प्लस 4 12। तो बना के देखते हैं, 4 फिर 7, 44, 77, सॉरी 47, 74, 77, फिर 444, 447, 477, 474, 477, ठीक है। और फिर 744, 747, एंड फिर यही निकालना था हमें, 774 निकालना है, 774। सो ये 747 है, फिर होगा 774 777 7। तो मेरे को क्या निकालना था, 774 निकालना था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th और ये 13th नंबर होगा। तो मेरे को पता चल गया 12 नंबर इससे छोटे हैं तो ये 13 नंबर होगा। तो मैंने कंप्यूट किया है इससे छोटे कितने नंबर्स हैं। तो क्या ये लॉजिक समझ आया है, क्या ये लॉजिक समझ आ गया है? तो मैंने देखा उस करंट नंबर से छोटे कितने नंबर हैं, वो मैंने कंप्यूट किया है यूजिंग दिस लॉजिक। शिवम से आ गई, बढ़िया है, बढ़िया कर है, ठीक है। सो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एडवांस कोर्स कब स्टार्ट होगा। एडवांस कोर्स 4 जुलाई से स्टार्ट होगा। इफ़ यू वांट मोर ऑनलाइन क्लासेस, मोर वेबिनार्स, मोर कोडिंग प्रॉब्लम्स, देन यू कैन, ठीक है, then you can join this course, launchpad advanced, right? So I will be covering question like these ऐसे questions भी करेंगे, competitive के भी करेंगे, we will have a hackathon also। so I'm also teaching algo++ course in launchpad advanced course, right?
So you can go to the online course section. You can register for the Launchpad Live course, and this is starting from 4th of July. 4th of July से start हो रहा है course, and I will be covering all data structures, all algorithms in C++, followed by classes on Java. I will also teach you Java after this course for, ठीक है? So you can join the advanced course if some of you have not done a course with us. So you can join the advanced course also, right? So this course is starting from 4th of July, right? And if you want to practice more questions on our website, then you can go to hackerblocks.com. You can go to hackerblocks.com and you can go to the practice section in the video resources. So if you want to see watch more videos, so there is one this question on bit masking. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है. So you can go to codingblocks.com/resources. तो यहाँ पे you can watch the video of this question. Question क्या कहता है? Question says there are numbers in the array and every number is occurring thrice except two numbers. Sorry, except one number, right? So I have to find out this unique number. So I have to find out this unique number. मेरे को इस number का पता लगाना है. So you can just try this question, right? Link is already given. You can try this question. अगर नहीं होता है then you can watch the solution by me. You can watch the solution. ठीक है? You can also, तो Algo प्लस प्लस भी ऑलमोस्ट सेम कोर्स है. जो ऑनलाइन एडवांस कोर्स होगा उसमें एल्गो प्लस प्लस के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे. ठीक है? So you can note down the website coding blocks resources. Coding blocks resources पे you can find out the questions, and if you want to get updated with our videos which we publish, जैसे बाइनरी सर्च पे एक पूरी सीरीज है. So you can watch these videos. I am also creating more content every time. Whenever I get time, I create more questions. So you can watch these videos also. And yeah. So I think that's all for today's webinar. So tell me how it was, कैसा लगा आप लोगों को, and what all topics you want me to cover in webinars. So you can also give me some suggestions also. So I will try to arrange one more webinar on advanced topic like DP with bit masking, traveling salesman problem, and we are also going to launch online machine learning course as asked by Sudhanshu. So we are launching these courses. We are launching online machine learning course. We are launching a course on Kotlin, right? So we are going to have a Android course in Java and Kotlin, live course from August. ठीक है? Live Android bootcamp. ठीक है? Live course on web development in Node.js from August. Live course on machine learning and artificial intelligence
This is also from August, right? So all these courses are coming online. So Kotlin is a new language for the Android development. So these courses are coming online from August, and Launchpad Live courses starting from 4 July, right? So if you want to study more and practice more, you can join the Launchpad advanced course, and there is a 50% discount before 4 July, right? So this is till 4 July, right? So the fee is just 5,000, and the course will cover your DS, algos, DP, greedy, bitmasking, tag queue, linked list, tries, W100Q deck. Game dev is also coming online, so I will be doing game development using JavaScript, right? So game dev mein we will cover web games in Phaser, right? Phaser and JavaScript, right? So these are the courses, and there is a interview boot camp. हाँ, वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स होने वाला है स्टार्ट अगस्त से, एंड एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे बूट कैंप हो रहा है. सो दोज हु आर इन दिल्ली and want to join this boot camp, they can also join. So in this boot camp we will cover your number theory, segment trees, lazy propagation, advanced graphs, max flow, Floyd Warshall algorithm, then probability, dynamic programming, game theory, complex greedy problems. So these are all topics we will cover in competitive programming bootcamp as well. Binary index tree, Fenwick tree. Okay. So we also have a book. You will also get the competitive programming book. So that's it for today's webinar. So you can send your feedback. How was it? You can also so we are also going to have a interview prep bootcamp, which is for OS, DBMS, networking, and system design topics, right? So these boot camps are planned in July, and yeah. So that's all for today. So I thank you all for joining this webinar, and really grateful you all stayed till the end, and we have already extended the duration by 30 minutes. So thank you for joining. Utkarsh, I have already taken one webinar on DP. So competitive coding bootcamp is not covered in the Launchpad Advanced course. Matlab, some of the parts are covered like DP and greedy, but not everything is covered, right? So if you want to learn more advanced topics like heavy light decomposition, query sort decomposition, offline queries in segment trees, lazy propagation in segment trees, then these topics are the part of competitive programming bootcamp, which will be held in July. Any other queries you